Good morning, 7 September. It's 9 o'clock. Welcome to the live morning scalp session. I'm getting your messages. Thank you so much. Okay, let's quickly begin with the usual disclaimer. I'm not SEBI registered. This session is purely for the educational purpose and under no circumstances should be seen as any invitation to trade. Please do not copy my trades as my risk appetite could be different from yours. I will not be responsible for your profits or losses. Should you still decide to copy my trades, I'm only demonstrating my analysis and logic for my own trades. The trade demonstration may lead to profit or loss at my end. Please focus on learning to trade yourself instead of my profit or my loss. अपना ध्यान सीखने में रखिए, मेरे प्रॉफिट लॉस की तरफ मत रखिए. Now that the regular disclaimer is in place, quickly, I have a Telegram channel as well as YouTube channel and Twitter. Please feel free to connect with me on these handles. I will share this in the chat. Just shared right now. And having said that, let's look at the market scenario. As you see, Dow Jones करीब 150 पॉइंट नीचे है, 0.5%. सो हमारा भी, क्योंकि ये मदर मार्केट है, सो हमारे भी मार्केट के खुलने में गैप डाउन एक्सपेक्टेड है आज. एज यू कैन सी, SGX निफ्टी 188 पॉइंट नीचे चल रहा है, 1 पॉइंट से ऊपर ज्यादा नेगेटिव है. इंडिया विक्स थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी काफी अनकंफर्टेबल है, 19.52. Dollar index, I think, is at historic highs for the last 20-30 years, probably 20 years maybe. So if I see the dollar index chart, annual chart, this is where it is trading. Amazing. So you to see कि ये अभी इस साल का है, ये लास्ट इतना हाई 2002 में था, तो 20 साल के हाईज को वो ऑलरेडी तोड़ चुका है. Or it is not looking like stopping. So there is a possibility of a massive fall in the times to come. When does it happen? We don't know, but the signals are clear that market में एक बड़ा fall आ सकता है. Let's go back to our other charts and the global scenario. Wait and watch. Let me put Bank Nifty back again here. I normally trade in Bank Nifty. This is a demonstration session today to help you understand that with even a simple capital of 1 lakh rupees, we can create another stream of income and actually make a decent revenue. You know, I'm taking a demo with 1 lakh rupees. You can take it. You can do it with 10 lakh or 1 crore. It is entirely up to you. So please suit yourself and your risk appetite. Mera demonstration is only with 1 lakh rupees. Okay, dollar index bata diya maine. Brent is comfortable at 91, but even with 91, this may not cut much ice. Dow Jones already indicate kar raha hai. So by and large, this is the story. Hang Seng, which is the Hong Kong market, is already down more than 1.5%. So we are expecting a cut today when we open. So this is my quick analysis, which is very simple today. The question now is कि market जब नीचे खुलेगा तो नीचे खुलने के बाद will it try to recover or will it continue to go down further? And that's a very tricky thing. Okay, so this is what needs to be understood.
The fact that it is likely to open gap down is almost certain. So we should see the next levels on the charts. मेरे चार्ट में मैं दो चार्ट लगा के रखता हूं, एक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लेफ्ट में और एक निफ्टी फ्यूचर्स राइट में. ये 3 मिनट का चार्ट है. मैं 3 मिनट के चार्ट पे काम करता हूँ. मेरे कुछ इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं, बट मेरा मेन जो रेफरेंस पॉइंट है वो पिवट लेवल्स है और RSI लेवल्स हैं. सो हैविंग सेड दिस, इसको मैं लेफ्ट में रखूंगा अपने, और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को मैं अपने राइट में रखूंगा. स्पाइडर सॉफ्टवेयर से मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है. कल भी मैंने बात की थी कल के सेशन में कि वी हैव जस्ट क्रॉस द लास्ट स्विंग हाई, but closure happened below that high on weekly basis. On daily basis also we had, while the trend continues of higher high, लेकिन ये कैंडल रेड है, ये वीकली था, ये डेली है, और यहाँ राइट साइड में आवरली है. आवरली में भी अभी भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन आज 99% खुलते ही ये सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाएगा. प्राइस एक्शन, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ. दिस इज वेयर आई ट्रेड. Why I trade in Bank Nifty futures? Because I realize that the risk to reward I get far better in Bank Nifty. इसमें मूव्स अच्छे आते हैं. अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको उसी मूव में बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है. ओके, ये मेरा दूसरा स्क्रीन है जिसमें मेरा आवरली चार्ट लेफ्ट में है, 15 मिनट का चार्ट बीच में है, एंड 3 मिनट चार्ट इज ऑन माई राइट. सो while as I said, आवरली चार्ट में सुपर ट्रेंड से हम ऊपर थे कल क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन 15 मिनट में और 3 मिनट के चार्ट पे हम नीचे गिर चुके हैं. सो देर इज a possibility that we might now, where will we now open? Okay, let's see. Let's use spiders, some wonderful features to put the retracement in place. So मेरे ये दो लेवल हैं, 39492 यानी 39490, यानी करीब करीब 39500 का अप्रोक्सीमेट लेवल है. या तो मार्केट यहाँ खुलेगा और यहाँ से डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, या अगर ये भी टूट गया तो देन इट माइट ओपन इन दिस जोन 39151, यानी 39150 के आसपास एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की. सो दीज आर द थ्री लाइंस दैट आर डिपिक्टिंग द सपोर्ट. ये फोर्थ भी है, बट ये मैं कम लगाता हूँ, लेकिन ये भी कभी कभी काम करता है. सो ये कहाँ तक गिरता है आज वी डोंट नो. वील हैव टू लुक एट दी प्री ओपन. सो प्री ओपन के लिए लेट्स लुक एट द प्री ओपन डेटा. ये तो कल के फिगर्स हैं, अभी आने वाला होगा कभी भी. सो लेट्स होल्ड ऑन एंड वॉच where are we opening up on Nifty and Bank Nifty. Ah, we've got this 17,500 के आसपास 130 पॉइंट्स 140 पॉइंट्स हम नीचे खुल रहे हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मोस्ट लाइकली 350 325 पॉइंट नीचे खुलेंगे. सो 39337 इज द लाइकली ओपन. तो हमारे को एक हिंट मिल गई है, 39337, यानी ये हो सकता है 39500 के आसपास खुले. 337 जो है वो करीब करीब यहाँ बनता है. तो अगर ये यहाँ खुलता है तो शायद ऊपर जाके कोशिश करेगा 39500 के आसपास. इस रेजिस्टेंस से वो डिसाइड करेगा उसने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है. बट इट्स नॉट अ गुड साइन एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न. बट इरिस्पेक्टिव, मॉर्निंग स्कैल्प का फायदा ये है कि आप मार्केट कहीं भी जाए, यू आर इन एंड आउट विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू minutes or seconds and your day is done. Okay, let's stand by for now the market open.
Any question, anyone so far? We still have 5 minutes. किसी का कोई सवाल? आज पार्टिसिपेंट्स कल से कम 2 गुना ज्यादा हैं, सो आई विल एक्सपेक्ट मोर इंटरेक्शन देन yesterday. Where links are being shared? श्रीकांत, कौन से लिंक्स की बात कर रहे हैं आप? Anupam, how do we decide on calls and puts? A good question. The fact is that we are opening gap down, most likely. तो हमारा ये रहेगा कि पहले कुछ सेकंड में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ का मूव दे रहा है. अच्छा, sorry, Shrikant, you are right. I had shared it in the wrong window. My apologies. I'll just share it once again. Are you receiving it now? Telegram, YouTube, Twitter. हाँ, ठीक है. Thank you. Thanks, Harmesh, for the voice confirmation. Thank you, Shrikant. इसका मतलब सबको मिल गया है. ये links हैं, you can subscribe. Okay. Now coming back to your point, Anupam, where do we open? एक सेकेंड, अभी आपको इसका भी आइडिया दे देते हैं कि कहाँ कॉल या पुट में से क्या लेना है. We'll work on that. Wait. Okay, so this is my trading terminal on my right. I've already set it up, and yesterday's last traded price was for Bank Nifty 39792. 39792, इस फिगर को याद रखिएगा. मोटे मोटे तौर पे 39800. अब इससे हम लोग कितने गैप डाउन खुलने की उम्मीद है? करीब 350 पॉइंट. तो इसके नीचे 300 पॉइंट कितना होता है? 39800 माइनस 300. 39 लिखिए, चैट पे लिखिए. 39800 माइनस 300, 39500. सो 39500 का आप फोकस कर सकते हो उसके आसपास का, बिकॉज दैट विल बी एट द मनी उस समय खुलते वक्त. और अगर मार्केट नीचे जाता है तो इससे आप करीब 200-300-400 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक का पुट लेंगे. आर यू गेटिंग मी? जो अभी प्राइस है 39800, जो लास्ट डेट प्राइस थी, इसके करीब 300 पॉइंट नीचे खुलने की उम्मीद है. 300-350 पॉइंट. तो अगर इसमें से आप 39500 या 39400 की स्ट्राइक बनती है, उससे करीब 300-400, 200-300-400 पॉइंट के आसपास, मैं 300 अगर पकड़ लेते हो आप, तो वहां की आप पुट लेंगे ताकि आप सेफ रहें और आप जो प्रीमियम इरोजन है उसके शिकार ना बन जाए, इवन इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल. टुडे बीइंग वेंसडे, या टुडे बीइंग वेंसडे, प्रीमियम इरोजन काफी होगा, इसलिए द ट्रेड हैज टू बी वेरी वेरी क्विक. There is also a possibility that I might not take a trade, or there is also a possibility that I might lose in my trade. And losses are part of the game. Please understand this loud and clear. There is no one who makes only profits. Okay. The only thing is when you are in loss, when to exit and how to cut out your loss, ताकि आपका loss कम हो और profits ज्यादा हो. Right. And इसको 2 दिन में नहीं measure कर सकते हैं, इसको over a period of time. For example, एक महीने में आप देखेंगे तो खुल गया मार्केट. ओके. I placed my trade for 39800 का पुट अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है. अभी ये मार्केट यहाँ पे जा करके रिकवर कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद है. सो आपको देखने में जरूर लग रहा होगा कि लॉस हो रहा है, बट लेट्स सी वेयर डज इट गो.
My buying price is 536. It's trading around 525 right now. Since it is between this resistance on the top and this support at the bottom, and the market being weak, it is likely to go down, and it is going down. So you can see 536 ka buy, 547 550 पे trade कर रहा है, and I would like to book out around 500. Well, it's still falling, so I am waiting. Even if I want to book out right now, 580 or so. No, it's still falling. मैंने 590 का सेल लगाया है. Let's see if it works out or not. No, it's not going to come so easily. 560, 560. You see, this is what happens. So my panel window is interfering with my trade. And we should be exiting. No, I think I would prefer to exit this trade at whatever price. 530. So it's a very small loss of 665 rupees. But the point is, right now, I'm accepting this loss. I was not able to book my profit in time because my panel window was interfering with my screen. So usko jab tak main hilata raha, tab tak wo price change ho gaya. But you see, it went right up to 592. So and we had entered at 536. So it's okay. So point is, number one, there's no point in saying कि अरे मैं book नहीं कर पाया, ये तो गड़बड़ हो गया. हो जाता है. It's okay. Point is, I'll now wait for the price to recover and go right up to this pivot level, and it will go. तो उस level पे जा करके then I will decide. If it is stuttering again, then I will decide. अभी तक वो trade mature नहीं हुआ है. And आप देखेंगे RSI has taken support at a 22 level or so. So market was highly oversold at that time. We'll wait. Still 1 minute or so to go. See, now if I had not taken that decision to exit, I would have been in bigger losses. So I'm happy to exit around my cost and say, ठीक है, ये मेरा trade mature नहीं हो पाया. It's okay. Now, this is the range that market has made. अगर इसको आप बड़ा करके देखेंगे, तो this is the range it has made. Yes, इस कैंडल का आप देखिए, ये इस रेजिस्टेंस पे जाकर के मार्केट प्राइस नीचे चला गया. But it has still not gone here. It is now trying to move again back towards the resistance, and we will take a decision at that time. कि अभी क्या करता है. Okay. So what we are trying to say is, does it
take resistance here, or does it break the resistance and go up? Do you notice that I only lost 6.55 points? That's all. My trade was with 4 lots of Bank Nifty, the demo trade. While I could have clocked um, about 7,000-8,000 rupees or more, which I'll move my panel window down so that it doesn't interfere with my trade. Okay. But it is okay to only lose 655 rupees. Brokerage bhi mila loge to 900 rupees nahi hoga. Okay, let's now look at this. So it's taking support at VWAP. Chances are it will go right up to this resistance and perhaps up to this super trend here, लेकिन ऐसा कोई confirm नहीं है. If it breaks the low of the second candle, which is the green candle, previous candle, then I would prefer to re-enter this trade. But only if it does that. So assuming I was able to take the profit at that time, the job was done within a matter of few seconds, if not minutes. By the way, what was the duration of the first trade? 9:55, 9:18, 3 minute के अंदर decision था, and this is when we were not able to make the profits in time. तो ये profit अगर book करना होता तो शायद 2 minute में हो जाता. Okay, it's still taking the support at the VWAP level. Let's wait and watch. Chances are now that it will go up because it has taken support 2 times. So the other option is we can take a call trade because it is trying to move up. Ye 535, 537, 540. Is it going up or is it 540? It's not convincingly going up. That's okay. 430. देखिए आप अगर वो 440 पे कॉल ट्रेड ले ली होती तो ये लॉसेस में अभी चल रहा होता. Because today is Wednesday, the move, if it is a slow move, you will anyway lose the money. So don't take a reverse trade so easily on a Wednesday and especially on a Thursday in the morning. So call trade is still around 430. 39,200 में क्यों कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि 39,550 की स्ट्राइक चल रही है लास्ट ट्रेड प्राइस. तो 300 पॉइंट के नीचे अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेड बनता है मेरा. 440, 440, 444. See, I'm a little hesitant, although I may be wrong, but I'm hesitant because निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है. ये मेरा अगर यहां से ये stagger करता है तो I would rather like to take a put trade because the direction of the trend is now down today. Let's see. I'll be happy to take this trade if it convincingly breaks the resistance. That is the time I can consider, even if it is a smaller move. Nifty has already reached the resistance. It is trying to break it. Bank Nifty is reaching. 2 more minutes to go for this 3-minute candle. आप देखिए ये रेजिस्टेंस लेकर के अभी तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया है. It is struggling. Now this price has gone up to 470, 470, 480, which is okay. I could have taken the trade, but I would still prefer to take the put trade because market में weakness है. So while it is trying to go up, I can take a few quick questions. Why is the price on the chart in the range of 39K while it is near 500 in the trading window? मैं समझा नहीं.
Why is the price on the chart in the range of 39K? No, this is the 500 is not rupees. It is the 500 is the, okay, this is it's the strike price for that particular strike. Okay, we'll discuss that later. Yeah, thanks. Okay. So it's still taking resistance at the pivot level. क्या देखेंगे ये भी 39,200 भी 492 का हाई लगा करके it is still now back to 466. Will it move up? It is likely to move up. Why? Because RSI is 32 in Bank Nifty. So let's consider this, but this is tricky. Unless until the move happens with force, there may not be much there. So 458, 460 is what the price is moving around this. So obviously it should not be considered because now it is trying to take resistance at this level and it is falling. Wait and watch. हमारा ओरिजिनल ट्रेड 39,800 पे था पुट का. So now I am keen to see whether it breaches the high of previous candle here or the low of the previous candle. Chances are the move will happen accordingly. So one of the things that we need to do is to control the emotions. अब वो ट्रेड निकल गया. There's no point in crying on it. Idea is that you should figure out how you can make the best of the next opportunity. Okay, it's still not broken the previous candle's low, while the resistance is definitely clear at this pivot level, but decision is not made as yet. और निफ्टी भी पिवट पे और सपोर्ट ट्रेंड के पास एक रेजिस्टेंस ले रहा है. Idea is to wait patiently for your time. Normally इतना टाइम लगता नहीं है, but this is how situation is. कई बार you miss the morning trade and it is okay. So one has to say, for example, आज अगर if I was in a hurry to close the trade and go to my office or my work, I would have said, ठीक है यार, आज का दिन निकल गया, doesn't matter. See, now it is in this specific zone. It's not able to go up, which is not a good sign for bulls. Ah, look at this. Are you seeing the move? I've entered again quickly. And my buy price right now is 510. And my BEP is 516. So anything above 516, I should be in profits. Why have I taken this trade? Because previous candle's low is broken, which is giving me the hint that the market may go down further. And it is. As you can see, I am back in profits. And it is falling with lot of force. Look at the large candles. So जितना भी इसको bounce back लेना था शायद ले चुका है. अब ये I am expecting the fall to accelerate. See, with 1 lakh capital, even if I'm making 3,000, I've made 3%.
but the move is bigger and it is seen. ऊपर जाने में इसको 4 कैंडल लगी थी और नीचे आने में इसको सिर्फ 2 कैंडल लगी हैं और अभी भी 2 मिनट का मूव बचा हुआ है इस कैंडल का, राइट? Nifty is already at the VWAP and is probably breaking that VWAP. Bank Nifty is all going down with force. What do you want? What do you want? Patience and not getting emotional, not crying on the spilt milk. हो गया, आगे बढ़ो. So even if I book the profit now, so it's about 4-5% that I'm easily making. I'm targeting only 1% in a day. 1%. Even at 1%, I should be able to make about 24% in 22 trading days. You do the maths yourself. Now it's about 6%, 6.5%. 516 का मूव लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस 576 के आसपास है, तो मतलब कितना हुआ? 60 पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका है. Wait and watch. It will take support here, Nifty at the VWAP. Therefore, it will also hold Bank Nifty from falling down. So this is the whole idea of seeing both Nifty and Bank Nifty in the same window. You understand how they move. They move in synchronization, perfect synchronization. आपने देखा या निफ्टी ने VWAP से बाउंस लिया तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बाउंस लेके, इसने अगर इसको जैसे ही तोड़ा, then the fall will be right up to this support S2 level, if not beyond. So one can take 1% profit right away or wait for the fall further. It is entirely up to you. You're seeing that the live market, the profit is at about 5% right now for the 1 lakh demo capital that I've kept in this trading account. So there is nothing to worry in terms of कि मेरे पैसे बने कि नहीं बने या नहीं बने सुबह के trade में. One has to understand that if I book it right now, it is 5%. So opportunity is very clear. Normally इतना time लगता नहीं है सुबह एक ट्रेड लेने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूं, बट आज आई न्यू कि उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड था, 22 था RSI, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके बाउंस बैक करके फिर नीचे गिरेगा और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने बोला था. नाउ यू सी इट्स ट्राइंग टू ब्रेक दिस सुपर ट्रेंड VWAP ऑन द निफ्टी, और ये जैसे ही टूटता है दिस विल हैव अ शार्प फॉल टू दिस वन and there should be a good move. If it sustains here, then it might bounce back. But since the market breadth may not be decent enough, let's look at market breadth. देखिए, 15 advances to 35 declines. 15 advances to 35 declines. 1:3 की market breadth है. Okay, and you can see this peacefully on स्पाइडर ऑल्सो. आप देखिए इसमें ब्रॉडर मार्केट में एडवांसेस 1138 एंड डिक्लाइन 787 है, विच मीन्स कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी थोड़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन निफ्टी 50 में अभी दम नहीं दिख रहा है मेरे को. ओके, इट इज ट्राइंग टू सस्टेन हियर, सो आई विल प्रेफर टू बुक whatever profits I get. No, okay, it's probably going down. See, even if I make instead of 560 भी मैं कर देता हूँ इसको, तो I should be able to book some profits. I'm just demonstrating this, so I'm not keen on going further beyond this. It's trading at 550. I'm making it 550 because I'm seeing a up move. Okay, so I've closed it at 545. This is just to demonstrate right now. So 2957 is the amount that I've booked, which is okay. So मेरा 3% करीब बन गया है. I could have booked at 6,000, 7,000. मैं आपको demonstrate कर रहा था, तो बता रहा था कि इसको इतने peacefully पे काम करना है, कोई पैनिक से नहीं काम करना है. Will it go down further? Very likely. Why did I not hold? I don't want to. So I don't want to be stressed. I just want कि
जितना हुआ, ये हमने काफी लंबी होल्ड कर ली ट्रेड, 9:29 पे एंटर किए थे और 9:35 पे निकले हम, तो दिस इज अबाउट 6 minutes और सो. बट how much time does it take to create 1%, 2%, 3% in the morning scalp? Nothing. Only few minutes. And that is what is required to be focused on. So I'm done with the trade. I'm happy to take questions right now. Feel free to shoot your questions.